Namaskar, hello and welcome to Sansad TV. I am Teena. A few weeks ago, a 17-year-old girl in Tamil Nadu died by suicide due to alleged forced religious conversion. The case made national headlines when the Supreme Court handed over investigation to the CBI amid opposition from the state government. The case not just acquired political overtones, but reignited the anti-conversion debate in the country. There have been demands to make forced conversion a punishable offence in the country. At present, there is no central legislation to regulate forced religious conversions. Although since 1954, there have been multiple occasions when private member bills have been introduced in Parliament, although none have been approved. But to restrict religious conversions carried out by force, fraud or inducements, a number of states across the country have enacted laws over the years. So which are these states? What do their laws say about freedom of religion? How do these laws in different states compare with each other? And the larger debate on the constitutional validity of such laws is what we will bring before you on this edition of Assembly Debates. So let's first look at the states that have enacted freedom of religion laws, also called the anti-conversion laws, that make religious conversion by force or allurement a punishable offence. At least 9 states have legislations that prohibit forced religious conversions. They include Odisha, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand and Uttar Pradesh. The assemblies of Tamil Nadu and Rajasthan have also passed similar legislations. The Tamil Nadu legislation was repealed in 2006 after protests by Christian minorities, while in the case of Rajasthan, the bills did not receive either the assent of the governor or the president. 2 more states, Karnataka and Haryana, are now set to enact laws to prevent unlawful religious conversions. The Karnataka Legislative Assembly passed the Karnataka Right to Freedom of Religion Bill 2021 on 23rd December last year. The bill will now be tabled in the Legislative Council. Whereas in Haryana, the State Cabinet approved the draft for the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill 2022 earlier this month. The bill seeks to prohibit religious conversions effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, marriage, or by any other fraudulent means, making it an offence. At the time of recording of this show, the bill had been tabled in the Legislative Assembly amid protests by opposition members. Let's now get you a brief history into how and when these laws were enacted by states, the legal challenges to these legislations over the years, and their present status. Odisha was the first state in India to enact the legislation restricting religious conversions. The Odisha Freedom of Religion Act 1967 provides that no person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religious faith to another by the use of force or by inducement or by any other fraudulent means. The act was challenged on constitutional grounds. In 1973, the High Court of Orissa held it to be ultra vires, meaning it is beyond the scope or in excess of legal power or authority. However, this was overturned by the Supreme Court in 1977 when the Constitution Bench of the Supreme Court held that Article 25 of the Constitution guarantees to all persons the right to freedom and conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion, subject to public order, morality and health. The Madhya Pradesh Dharma Swatantra Adhiniyam 1968, the MP Act of 1968, defined allurement to mean temptation in the form of any gift or gratification or grant of material benefit, monetary or otherwise. Both require the previous sanction of a district magistrate or an authorized officer to prosecute for an offence and are identical in terms of other provisions. In 2021, the MP Act of 1968 was repealed and replaced by the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 2021. Chhattisgarh retained the anti-conversion law of Madhya Pradesh after being carved out as a separate state in the year 2000 and adopted it under the title Chhattisgarh Freedom of Religion Act 1968. It also retained the subsidiary rules for implementation of the Act. In 2006, the state legislature amended this Act to make it more stringent. In 2006 itself, the Chhattisgarh Assembly passed the anti-conversion bill, the Dharma Swatantra Adhiniyam Act.
This law decreed that if a person returns to the religion of their ancestors or their own original religion, it shall not be seen as a conversion. The Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act was passed in 1978 by the Janata Party-led government of the then Union Territory, but it was not implemented due to lack of subsidiary rules. The Gujarat Freedom of Religion Act 2003 came into force in 2003. In 2021, it was amended to include provisions on conversion by marriage or by getting a person married or even by aiding a person to get married. The Gujarat High Court, in its interim order dated 19th August 2021, stayed some of the provisions of the amendment. The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act 2006, modelled on existing anti-conversion statutes, was enacted in 2007. In 2019, the HP Act of 2006 was repealed and replaced by the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act 2019. The Jharkhand Assembly passed the Freedom of Religion Act in 2017, making any fraudulent or forcible conversion of an individual a non-bailable offence, with the penalty of a 3-year sentence and a fine of 50,000 rupees. The Freedom of Religion Acts, also referred to as anti-conversion laws, are state-level statutes that restrict the number of religious conversions. In April 2018, the Uttarakhand government passed the Uttarakhand Freedom of Religion Act, under which fraudulent conversions done through force or allurement are non-bailable offences and can lead to imprisonment up to 5 years. In 2021, the Uttar Pradesh government issued a gazette notification to enforce the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021. The State Assembly passed the bill in February last year. The law provides for imprisonment up to 10 years and a maximum fine of 50,000 rupees for violators. The law declares a marriage null and void if the conversion is solely for that purpose, and those wishing to change their religion after marriage need to apply to the district magistrate. The Act mainly envisages that no person shall convert either directly or indirectly from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means or by marriage, nor shall any person abet, convince, or conspire such conversion. Also, the onus to prove that the conversion has not been done forcibly will lie on the person accused of the act and also the convert. And the most recent legislation, the Karnataka Right to Freedom of Religion Bill 2021, was passed by the Karnataka Assembly in December last year. It prohibits conversion from one religion to another by misrepresentation, force, fraud, allurement, or marriage. The bill states that no person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from another religion by use of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means or by marriage, nor shall any person abet or conspire for conversions. Let's now look at what's in these anti-conversion laws in states where the acts exist and where they are in the making. On the provision of prohibition on conversion, all these states have banned conversions by force, fraud, or allurement and inducement of money. Only the Himachal Pradesh, Uttarakhand, and UP laws ban conversion through marriage. On the procedure of conversion, the Arunachal Pradesh law is considered the most lenient legislation in the need for notice of conversion. It makes it mandatory only for the priest who has performed the conversion to give notice to the district magistrate or similar authorities after conversion. It also does not require the converted person to make any such declaration. In all other states, advance notice by the priest or religious converter as well as the converted person is required. Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have the strictest provisions requiring a person who wishes to undergo a conversion to give a 60-day notice to the district authorities. The priest is required to give a 1-month advance notice in UP and 2 months advance in MP. Uttarakhand, Himachal Pradesh and Chhattisgarh have prescribed 1-month notice for both. Talking about penalties for causing or abetting conversion, Odisha, which has the oldest law, prescribes the lowest imprisonment time, 1 year for forced conversion. In Arunachal Pradesh, the imprisonment is up to 2 years. In Gujarat, Chhattisgarh and Jharkhand, the jail term is up to 3 years, while Himachal Pradesh, Uttarakhand, UP and MP prescribe up to 5 years jail term for forced conversion. In case of a minor or a woman, the
The punishment is higher in all states. Let's now listen in to some of the debates that took place inside state assemblies before passage of the anti-conversion bills. Beginning with Chhattisgarh. On 3rd August 2006, then State Home Minister Ram Vichar Netam proposed that the House relook the provisions of the Chhattisgarh Dharma Swatantra Adhiniyam 1968. He urged that there were certain shortcomings in the Act and there was need to change that. अध्यक्ष महोदय, अधिनियम मध्य प्रदेश में 1968 से जब से बना तब तक उसमें जो संशोधन करना तो संशोधन ही आपने 50 साल तक नहीं कर पाए। हम उसे देख करके हम उसमें संशोधन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कोई आज की बात नहीं है। 1968 के पहले भी इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सीपी बरार जब रहा, सीपी बरार, उस समय भी नियोगी कमीशन बनी थी अध्यक्ष महोदय। और नियोगी कमीशन भी बना करके इन्हीं भावनाओं को लेकर ही बनाया गया था कि प्रदेश में इस तरह से बहुत बाहरी ताकतें आकर के इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। यहां गरीबी, लाचारी, विवशता, अशिक्षा, उनका एक नाजायज फायदा उठा करके लोग धर्मांतरण के आड़ में राष्ट्रांतरण करने की योजना पे काम कर रहे हैं। इस बात की विरोध है और इसलिए हमारी सरकार ने आज ये विधेयक एक संशोधन के रूप में लाया। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी धर्म परिवर्तन जो स्वेच्छा से करने वाले हैं उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। धर्म परिवर्तन तो उसका मौलिक अधिकार है। हम अगर स्वेच्छा से कहीं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको कोई रोक नहीं रहा है। रोक हम इस बात के लिए रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि कोई ऐसे, जैसे तमाम सारे हमारे सदस्यों ने जो विचार यहां पे व्यक्त किया है कि उसके गरीबी का, लाचारी का, विवशता का, अशिक्षा का, उसका एक लाभ लेकर के उनका गलत इस्तेमाल करके भय और आतंक के बल पे ऐसे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे लोग के विरुद्ध जो है ये कानून जो है कार्रवाई करेगा अध्यक्ष महोदय। Members of the opposition parties sought clarification from the government on various provisions of the bill. ये जो धर्म परिवर्तन है, जो अधिनियम 1968 में बना है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इनके 2.5 साल, पौने 3 साल के कार्यकाल में अभी तक, इस 2.5 साल, पौने 3 साल के कार्यकाल में कुल कितने व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन करने की सजा हुई। नंबर 1, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो सजा हुई है, जिनके विरुद्ध चालान कोर्ट में पेश किया गया है, उनमें कौन से वर्ग के व्यक्ति थे, कि कितने आदिवासी थे, कितने अन्य समाज के व्यक्ति थे, किस किस गांव के थे, मैं ये अपने परिभाषा में जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन के पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे आदिवासियों पर में बहुत सारे न्यायालयीन प्रकरण को वापिस लिया गया है फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत। क्या अगर ये अधिनियम चालू हो जाए तो कोई भी आदिवासी जो धर्म परिवर्तन, यानी कोई गरीब समाज जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उनके ऊपर में अगर आर्थिक बोझ अगर लागू हो जाता है तो क्या उस आर्थिक बोझ को सहने की क्षमता उनमें है क्या? मैं जानना चाहता हूं, मुझे कृपया बताएं। पावर को चाहिए कि वो जो मतलब बुनियादी जरूरतें जिनको आज तक हम लोग फुलफिल नहीं कर सका है, और जिसके चलते ये जो मतलब कुछ लोग इस प्रकार का प्रलोभन से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए अगर उकसाने में कामयाब हो रहे हैं, और उन लोग या इस वार्ड से उस वार्ड में ले जाने में उन लोग अगर कामयाब हो रहे हैं, तो उन कमजोरियों की ओर जब तक हम लोग नहीं देखेंगे और उन कमजोरियों का उपचार जब तक हम लोग नहीं करेंगे, ये प्रक्रियाएं सतत बनी रहेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहता हूं कि मतलब ये जो प्रतिवेदन है बहुत छोटा प्रतिवेदन है। आपका ऑर्डिनेंस है जो मतलब एक लिमिट, मतलब एक पक्षी है, इसमें वो व्यापकता नहीं है, इसमें मतलब वो उदार दृष्टिकोण जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इसको जल्दीबाजी में ले आने की कहीं कोई जरूरत नहीं थी, आधी अधूरी है। हम लोग इसीलिए विरोध करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। कभी और मौका आया तो इस पर और भी बहस करने की गुंजाइश बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें मौका दिया, धन्यवाद। BJP member Subhav Kashyap said the bill will check forced conversions of the tribal population in the state. हमारे जो सबसे ज्यादा यदि कोई पीड़ित है
तो ये धर्म परिवर्तन में आदिवासी समाज और हम लोग पीड़ित हैं, और सरकार का यदि कोई प्रयास कर रहा है तो आपको तारीफ करना चाहिए, मगर नहीं, नया प्रयास नहीं। 30 दिन के पूर्व जो सूचना है नया प्रयास है शासन का, इसलिए आपको तारीफ करना चाहिए नेताजी। और आप हैरान होती है, हमें तो इसका जितना ज्यादा समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यदि सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो हमारा आदिवासी समाज, और खास करके जो वनों में जो लोग रहते हैं उनको मोहरे बनाए जा रहे हैं। आप बीजापुर के सुदूर अंचल में जाके देखिए, सरगुजा के सुदूर अंचलों में जाके देखिए कि वहाँ किस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही है। Replying to the debate, the Home Minister quashed concerns that the legislation was targeted towards one religion. और रही बात अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम में कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म पर ही कार्रवाई होगी। कोई भी उस परिधि में आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और इसलिए अध्यक्छ महोदय, इस विधेयक को लाने के आशय ये भी था कि वर्ष 2001 में 169 धर्मांतरण हुए अध्यक्ष महोदय, 2002 में 393, 2003 में 198, 2004 में 135, 2005 में 205, 2006 में अभी 39 ऐसे धर्मांतरण के प्रकरण आए हैं अध्यक्ष महोदय। The bill was then passed by a voice vote. जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने। Moving to the Uttar Pradesh Vidhan Sabha, where the prohibition of unlawful conversion bill was passed on 24th February 2021. Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna introduced the bill and explained its need and purpose. भारत के संविधान में हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, और हर प्रकार से हम धार्मिक प्रचार के लिए, अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इस बात के लिए विवश किया कि इस प्रकार का बिल लाया जाए कि जिसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या किसी एल्योरमेंट के आधार के ऊपर किसी भी तरीके से मिसरिप्रेजेंट करके मानवर, खास तौर से शादी इत्यादि के पर्पस पर जब धर्म परिवर्तन करवाया जाता है मानवर, तो वो अपने आप में किसी प्रकार से एडमिसिबल नहीं है। और इस प्रकार की जब घटनाएं आई सामने तो हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसके लिए मानवर हमने पहले एक अध्यादेश जारी किया था। आज हम विधेयक के रूप में उसको लेकर आए हैं और इसका उद्देश्य केवल यही है कि अगर फोर्सफुली किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के आधार पर, किसी एल्योरमेंट के आधार पर, जहाँ पर व्यक्ति की फ्री इच्छा न हो, स्वतंत्र इच्छा न हो मानवर, वहाँ किसी तरीके से मिस रिप्रेजेंट करके, धोखाधड़ी करके, गलत वादा करके अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है मानवर, तो उसका इस पर निषेध है और उस पर पेनाल्टी की और सज़ा की व्यवस्था भी मानवर की गई है। इसमें बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है जो धर्म परिवर्तन कराता है मानवर, और ये कोशिश की गई है कि इस संबंध में जितने भी हमारे सामने प्रश्न उठ सकते हैं उन सबका समाधान हमारे इस बिल में दिया गया है। Opposition party leaders, however, demanded that the bill be referred to the select committee for consideration. तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जिसके में बड़ी चर्चा और गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो इस पे इस तरह से जल्दबाजी में निर्णय लेके इसको प्रवर समिति को के सपोर्ट कर दिया जाए। संविधान की जो मूल आत्मा है, मैं समझता हूँ कि ये विधेयक उसके खिलाफ है, निजता को चुनौती देता है, अधिकारियों को इसका दुरुपयोग करने का पूरा मौका देने का काम करता है। और इस विधेयक बनने के बाद कोई भी अगर इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस बात के लिए चुनौती देने का काम करेगा, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि कोर्ट भी इसे संज्ञान में लेकर इसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने का काम कर देगा। मेरी केवल आपसे इस बात की गुजारिश है कि इस विधेयक को इससे पहले ये विधेयक बने, इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें
और उसके बाद निर्णय ले ले। क्या जल्दी है इस बात को अभी से इस बात का कानून बनाने की और निर्णय ले। मान्यवर, हमारा संविधान जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने स्वयं किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, निजता का भी अधिकार हमें मिला हुआ है। मान्यवर, निश्चित तौर पर संविधान विरोधी ये विधेयक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इस बात की व्यवस्था की थी और मान्यवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान सभा में इस बात को कहा था कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है, उन्होंने कहा था धर्मों और जातियों में बटा हुआ देश कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर हमें भारत को मजबूत लोकतंत्र देखना है तो इन जो बाधाओं को हमें पार करना होगा। The Parliamentary Affairs Minister allayed concerns of members that the bill was violative of the Constitution. He reiterated that it was only to check forceful and fraudulent conversions. इसमें भी इस बात की छूट दी गई है कि अगर आप चाहें तो आराम से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं स्वेच्छा से। उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई, संविधान के खिलाफ हरगिज नहीं है। ये बिल्कुल मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। सवाल यह है कि हम जब कह रहे हो कि हमने धर्म परिवर्तन को हमने रोक रहे हैं, अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन फ्रॉडुलेंट तरीके से, मिसरिप्रेजेंट तरीके से, धोखा देकर, फरेब करके, एल्योरमेंट के आधार के ऊपर अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो ये सरकार उस बात की इजाजत नहीं देगी। ये सरकार उसको प्रतिषेध करेगी, रोकेगी और हर प्रकार से उसकी व्यवस्था करेगी। और यही हमने किया इस दिन। हमने किसी तरीके से स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को पर कोई रोक नहीं लगाई मान्यवर। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे गुजारिश है इसको पास किया जाए। After this, the bill was passed. So although state after state is enacting laws to check forced conversion and some others mulling over it, the subject remains a matter of debate. We got experts to share their perspective on why the bill is contentious, which of its provisions are being debated, and could there be a legal challenge now that Haryana and Karnataka are going ahead with these legislations. These laws probably do not have a proper constitutional validity, according to me. And these are sort of because of the changing atmosphere in the society, where the religious nationalism is trying to dominate the scene. And this is one of the ways, while the laws are called freedom of the religion bill, actually they curtail the freedom of religion, which is our constitutional and moral right in our society. Legally, this needs to be re-examined properly at the larger bench, and whether these laws do stand the scrutiny of the basic constitutional provisions, like particularly 25 to 30, which give us a full freedom to practice, preach, and propagate our religion. So I am very sure if the Supreme Court, in all its wisdom, constitutes a larger bench and re-examines these laws, they, according to me, will not scrutiny the taste of the provisions of Indian Constitution, which we should be having. Those in favor of these legislations say they are needed to restrict and curb incidents of forced religious conversions in the country. Currently, there is a great need to manage the anti-conversion activities that is happening in this nation. However, I am not really convinced with the bill, because this anti-conversion bills have been enacted in almost 7 states, but they have all proved to be bills or laws which are nothing but toothless tiger. So, though it is a welcome move at a state level, because the anti-conversion laws, when we look at the constitution, it says very clearly it is a state subject. If you look at the right to religion, the anti-conversion law itself, in all the 7 states whichever have been enacted, how many convictions have happened? How many arrests have happened? Have they been able to stop conversion? Absolutely no. So the anti-conversion law, though it is a welcome move, it is nothing but a face wash. It is not going to be anywhere effective in curbing the conversion activities of the communities who are involved in the business of conversion. So while there are differing views on whether there is a need for anti-conversion laws or not,
and the debate is only raging. The fact is, as many as 10 states already have them in place. Some others, like Haryana and Karnataka, are in the process of getting them passed in their respective legislative assemblies, while some others, like the state of Assam, are mulling over the idea and may be bringing a similar legislation soon. That brings me to an end of this program. Thank you to all my viewers for joining me on this particular edition of Assembly Debates. See you next time. Thanks very much for your time.